गुड इवनिंग आप सभी को मेरा नमस्कार। एंड जैसा कि हमने आपसे बात करी थी कि हम हर शनिवार कोशिश करेंगे कि आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हों, that we will come live every Saturday evening by 4 p.m. and we will discuss some issues related to the menstruation and menstrual problems. Moreover, the issues related to the fertility and the fertility related problems, this would we would be addressing again and again in multiple sessions. And these seminars would be for general public who are suffering from the diseases related to the menstruation or fertility issues or fertility related problems, whichever are there. So we would be continuing these sessions repeatedly again and again, and considering the same today again we are here in front of you all, and we will be discussing about the menstruation related problems, menstrual issues, what are the women, what all menstrual issues women face and why they face, so why they are having all those issues. All these things we would be discussing in today's session, and moreover, most importantly, along with that, we will be discussing the home remedies for the same. What home remedies can be taken, how we can control it by our own selves at home. But yeah, definitely, if you are having some major issues, so you must need to seek the consultation of a Ayurvedic doctor, so that these things can be resolved at a very early stage and later on they should not become a disease, but rather than when you have some disbalance or imbalance in your hormones which is leading to the menstruation related issues or menstrual problems, at that same level only they can get controlled and not to become a major issue. So right, with the same, I, Dr. Prashant Jain, welcome you all in the today's session. I'm Dr. Prashant Jain. I'm the founder of Nirmal Ayurved and Ayu Fertility. Nirmal Ayurved is basically a segment in which we will deal with all the treatment aspects of diseases, whatever they are in the current scenario. Moreover, all the rejuvenation programs, rejuvenation health cycles, which we will deal in the Nirmal Ayurved. Ayu fertility is also a sister concern of Nirmal Ayurved, but in this Ayu fertility, we specifically deals with the fertility and related issues of the female. Moreover, any sort of infertility or fertility related issues whichever come across with the males. So whether it is a male or a female, we cover for the both. Moreover, fertility starts from the age of approximately at the age of 13. Since then, the fertility cycle of a human being starts and it will end up to the age of 50 or 60 years. In females, it ends generally at the age of 50, and in males, it ends approximately at the age of 70, or it won't end at all. So all these things we will be cover in the branch of Ayu fertility. Ayu fertility is specialized in dealing with the fertility and fertility related issues. So for today's session, we are having our esteemed guest with us, Dr. SEETHA Biradar. Dr. SEETHA M. Biradar is professor and HOD in Department of Roga Nidana in Vijaypur Medical College, Bardev's Vijaypur Medical College. So, Dr. Sita, I request you to please switch on your camera so that our viewers can see you and they can listen to you, they can identify you properly. Yeah, we welcome Dr. Sita in the session. So, yes, Dr. Sita, am I audible to you? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, good evening, Dr. Sita. So, Good Dr. evening, Sita sir. is Ayurveda specialist, and she is dealing in the field of Ayurveda, Panchkarma, along with that fertility and infertility, along with all these issues she is addressing. And she is a very renowned Ayurveda physician in Karnataka. She is professor and HOD in BLDA's AVS Ayurveda Mahavidyalaya, Vijayapur, Karnataka. So Dr. Sita Biradar is here with us, and she would be guiding us that why these menstrual disorders occur in female at particular age group and how to tackle all these female disorders, how we can manage these disorders up to maximum extent at home, what home remedies we can consider, how why these disorders occur, and what are the things which we need to take care of to avoid all these disorders and to keep us healthy, to keep a woman healthy. So on this Women's Day, I would like to wish all the women's of, not Women's Day, on this Mother's Day, Yes. I would like to wish all the mothers a very, very happy Mother's Day. And we wish that every woman should be a mother
and considering the same, they should not have any sort of issues related to the fertility or menstruation. If their menstruation cycle is healthy, definitely their reproductive cycle will be healthy, and every woman will be a happy mother. So once again, I wish you a very happy Mother's Day all. And I request Dr. Sita Birada to please join the session and to please guide us through all the process of menstruation and how this imbalances occurs and how we can take care of it. So, Dr. Sita Birada, please come on the session and guide us further. Thank you. So now again I have to share the PPTs. Yeah, you can start. Yes, sir. Good afternoon to one and all. Om Dhanvantaraye Namaha. So I respected Dr. Prashant Jain sir and the public. So today I am here to give an introduction about menstrual disorders and the home remedies. So, menstrual disorders, it is a burning issue nowadays, as we can see more of the people suffering from this infertility, female as well as male. So, in female infertility, we can see major cause related with menstrual disorder. It may be related with oligomenorrhea, it may be related to PCOD, or it may be related to menorrhagia or endometrial disorders. So we can today see briefly what are these menstrual disorders and all. Next slide. You can operate the slides by yourself on the Okay. screen itself. So the contents of this today's presentation is what do you mean by abnormal menstruation and incidence of this menstruation, burden of this disease and different types of menstrual disorders, differential diagnosis of abnormal menstruation, evaluation and management. So introduction. So this menstruation usually it is a normal physiological phenomena among this women of reproductive age. The common disorders related to female reproductive system are menstrual disorder major. So these disorders are mainly related with disturbed functioning of menstrual system and large of female population facing these problems. Therefore, it is required finding out a way to get rid of these elements. So to maintain this health of female, thereby the health of society and also the nation. As per Ayurveda, Vataja Artava Kshinartava, and Artava Kshaya are the common Stri yogas related to menstrual disturbances. The loss of menstrual cycle described as Nashtartava in Ayurveda, and these disease mainly arises related to vitiation of Vata dosha. As per modern medical science, we have seen this as a hormonal imbalance, tumor in pituitary gland, it may be hypothyroidism, genetic factors, environmental hazards, dietary factors, along with injury to genital organs, are considered as the major cause of such menstrual problems. But as per Ayurveda, it is considered as Rasadhatu Vikriti and aggravation of Vata dosha and indulgence in Vityahara Vihara, etc., mainly initiating Artava Dushti. Improper hair growth, skin representation, inappropriate body mass index, stress, lack of luster, abdominal pain, infertility or irritability, etc., are associated features of menstrual disorders. So coming to, if you see the female reproductive organ anatomy, so uterus, fallopian tube, ovary, cervix, and vagina are the main involved structures. So coming to puberty, so puberty in girls is the period which links from childhood to adulthood. The profound physiological, morphological, psychological changes are seen during this puberty, whereas nowadays we can see the precious puberty more, that is between age of 8 to 10 years. And we are also seeing the delayed puberty, that is the girls are not maturating even after the age of 16 years. And the puberty menorrhagia is the also the condition which we can see in the society. The influence of hormones, which are the hormones influencing this menstrual cycle. The main hormones which are influencing are gonadotropic releasing hormone, human chorionic gonadotropic hormone, gonadotropins, FSH, LH, estrogen, progesterone, prolactin, and thyroid hormones. So nowadays, whenever the infertility cases are there, especially female infertility, we used to screen all these hormones
to rule out whether there is any hormonal changes are there which affects especially the ovulation and all. So the hormonal influence, how it the cause. This estrogen causes lining to thickening, whereas progesterone causes lining to shedding. This causes the uterine thinning, endometrium. Whereas menstruation, it is the visible manifestation of cyclic physiological uterine bleeding, which meant for the uterine bleeding out of shedding of this endometrium. Especially it is classified as uterine cycle and the ovarian cycle. So the menstrual cycle is the major thing which plays important role in case of reproductive life. Whereas the phases of menstrual cycle, it has got follicular phase, ovulation phase, luteal phase, and menstrual phase. Whereas the characters of normal menstruation, the age, menarche should be from 12 to 16 years. Duration of menstruation, the days will be 2 to 7 days. The amount of menstruation blood will be 30 to 80 ml. The cycle duration will be from 25 days or 28 days, some have 30 days, like that. So whereas premenstrual syndrome, we call it as PMS, or whatever the symptoms faced by the woman during before the onset of menstruation, which we call it as premenstrual syndrome, such as pelvic discomfort, backache, you can see the lower abdomen pain, fullness of the breast, headache, then depression. So these are the conditions which we can see in case of premenstrual syndrome. So what are the abnormal menstruations? So there are so many causes for this abnormal menstruation. The conditions which we call medically as abnormal uterine bleeding, amenorrhea, hypomenorrhea, oligomenorrhea, menorrhagia, metrorrhagia, manometrorrhagia, polymenorrhea, then fibroids, which are also the cause, premenstrual syndrome, and premenstrual dysphoric disorder. So, what is abnormal uterine bleeding? So, if it is duration is having more than 8 days, and the flow, if it is more than 80 ml, heavier than normal flow, which we call it as more than 6 the pads which are used by the lady. If it is like that, if we call it as abnormal uterine bleeding, then more frequent cycle, that is less than 28 days, and more delayed cycle, more than 36 days, intermenstrual bleeding, and absence of menses. So जो भी इधर इस तरह से है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, उनको हम लोग कॉजेस बोलते हैं. इस तरह के साइकिल है तो उनको हम लोग बोलते हैं कि ये एबनॉर्मल है. So prevalence. So the prevalence of this menstrual cycle being disorders, which by according to WHO it is 76.9%. The most common menstrual disorder is PMS, that is premenstrual syndrome, which is 71.3%. Assessment, this is according to the WHO. Dysmenorrhea is 46.3, whereas amenorrhea 21.3, oligomenorrhea 12.8, polymenorrhea 22.2, whereas menorrhagia 15.9, and hypomenorrhea 15%. So amenorrhea we can see in many conditions, especially which we call it as amenorrhea as absence of menstruation, either physiological, that is before puberty, or during pregnancy, whereas pathological amenorrhea has got many different causes. And oligomenorrhea means a menstrual bleeding which occurring more than 35 days apart and which remains constant at the frequency. So this condition we can call it as oligomenorrhea. Whereas hypomenorrhea, it is the bleeding or having scanty periods last for less than 2 days, which we call it as hypomenorrhea. So these conditions, the patients when come to the clinics, they will complain of such things. So we used to diagnose as hypomenorrhea in such cases. So dysmenorrhea, this is common thing which we can see in adolescents, girls also after attaining the menarche, they will be having this primary dysmenorrhea, which will disappear after getting marriage, and some will have secondary dysmenorrhea. Even after delivery also, this secondary dysmenorrhea will be noticed.
So it is the condition where the painful menstruation of sufficient magnitude so as to incapacitate day-to-day activities. So the lady will be experiences the abdomen pain. She will having discomfort, and she will have some mood swing also. So this primary dysmenorrhea will suppress after marriage, whereas secondary dysmenorrhea will have some infection also. So epimenorrhea. This epimenorrhea, it is defined as cyclic bleeding, where the cycle is reduced to an arbitrary limit of 21 days or less, remains constant at that frequency. Whereas menorrhagia, this also a condition which we major cause, we call it as stress, it may be, or vata also. Nowadays we can see the working women, and if they are not following proper diet and lifestyle, we can see this menorrhagia condition in our day-to-day society. So cyclic bleeding at normal intervals, the bleeding either excessive amount more than 80 ml and increased duration of the bleeding. So metrorrhagia, it is defined as irregular or cyclic bleeding from the uterus. Whereas investigations, what is the need of investigations to rule out this menstrual disorder is to confirm the menstrual abnormality, to exclude the organic pathology, or to identify the possible etiology, uh, which is the causative factor among these menstrual disorders. For that, we need the investigation, and also to work out to see the therapy protocol also. The special investigations, what we can suggest are blood values. Especially there's a routine, we have to see the HB. Is there the woman is suffering from anemia or having any decreased platelet count, and bleeding time, CTBT, what we call bleeding time, coagulation time. Then thyroid. Thyroid is also nowadays burning issue. If she is suffering from hyper or hypothyroidism, the menstrual disorders also occur. And radiological investigations to rule out any fibroids are there, polyps are there. So for that case, we have to suggest USG and of abdominal pelvis, HST to rule out any blockage of fallopian tubes, diagnostic laparoscopy and hysteroscopy, especially in case of after menopause also, if the lady is having any type of complication related with bleeding menstrual disorders, also like uh, postmenopausal bleeding, and we have to go for hysteroscopy. That is very important thing as a diagnostic aspect. So treatment we can adopt in three ways. One is general, conservative, surgery in modern. So general treatment, usually we suggest bed rest. According to Ayurveda also, the lady who is during menstruation, she should not get more stressed physically and mentally. She needs bed rest, which is very important and very need also. Whereas normal activities in between periods to avoid the pelvic congestion, then assurance, then counseling is very important for the psychological and emotional problems. Anemia should be corrected by diet, hematinics, or blood transfusion if she is having any anemic problems. Clinically evident endocrine abnormalities should be investigated and treated accordingly. So, whereas hormonal treatment, when general treatment doesn't work out, we have to switch on to hormonal treatment. So, in that case, we have to go for nortestosterone, which are these are all modern drugs which are used by modern doctors, methoxyprogesterone and phenamides and tranexamic acid, which are nowadays, and these are common hormones used by all gynecologists. So coming to our home remedies, which is very important, because whenever we have the problems, first of all we want to rule out in whatever the limit of our limits only, and then we will move on to some other. So in these home remedies, what we can do it. So, in case of menstrual disorders, especially castarga, which we call it as dysmenorrhea, it may be primary or secondary. So, internally, we can use hingu, easily available in all kitchens, in our kitchens. So, we can take it a pinch of hingu, mix it with hot water or buttermilk. If they won't want to hot water, they can choose buttermilk, or in also ghee also, gutta, which we call it as butter or ghee. We can mix it and we can take it immediately. The pain will be subsided. And jeeraka, which we call it as jeeraka, which is also available in our kitchen. So we can make it jeeraka kashaya.
1 spoon of jeeraka with 1 glass of water, and make it kashaya, and then we can add it jaggery, and then we can drink it easily. The pain will be subsided. And this is Lata Karanja. In olden days, all our ancestors used to follow this. This Karanja, this bija, this is taken, and it is rubbed with honey and easily applied on the tongue, which relieves the pain. Whereas Shatapushpa, this is which we used to call it as soap. Usually we used to eat after our meals. So this Shatapushpa Kashaya can be made, and we can drink easily to really get rid of the pain. Whereas locally we can apply Irandapatra, Alpapatra and Nagavalli Patra, which we can make it bharjana with the oil, and then we can apply those leaves on the lower abdomen where the patient is having pain, and immediately they can get rid of. These are all pain reliever, vedana shamaka we call it as. Whereas in case of oligomenorrhea, so this I have practiced in my clinic also. Those patients who are suffering from oligomenorrhea, we can give this Krishnatila, very easily available. This Krishnatila, 1 spoon Krishnatila we have to take and make it powder, and then we want with 1 glass of water we have to make kashaya and ask the patient to drink before the onset of menses 2 days, and during periods also she can take it once in the morning, so the she will get rid of this oligomenorrhea. And we can advise this Kulatta. Kulatta is also the best drug which is available in usually in our Karnataka and all. We used to prepare Kulatta bhaji. We used to make of this bhaji also. So this Kulatta is very important. We have to take 1 glass of water and add 1 spoon of Kulatta and boil and reduce it to half glass. In that, Maricha and Saindava Lavana is added, and ask the patient to drink that. Even if they are not ready to drink, they can take that liquid after making it boil in pressure cooker. That liquid residence of that kulat, we can drink it. It is also very effective. And Kumari Majja, which we will have in our gardens also in home. This aloe vera, which is easily available and easily grown, and that Majja is taken, and daily 1 spoon of that Kumari Majja, aloe vera, the inside part is taken daily 1 spoon. It is very much good as acts as uterine tonic. So many preparations are also available with this Kumari Majja, Kumari Asava and all. And Goka Mutra, which is very important. That also, with early morning, with 1 glass of hot water, we can add 4 to 5 drops of Gomutra and we can drink it. So you can see how we'll get rid of this oligomenorrhea. Then Indian Sarsarpalla juice, which is called as Anantamula, it is also in Kannada we are called Sogadi Peru. So it is also available in South territory of Karnataka, which is very fruitful in case of oligomenorrhea, and it also relieves and a very soothing effect. Papaya. Papaya fruit, here we have to take it as a raw papaya juice. We have to prepare and we have to drink it. That is also very effective. And in case of menorrhagia, internally there are this Kadali Pushpa. Kadali means this banana tree. That flowers is taken, and that flower juice is prepared. Then 2 tsf of juice, an empty stomach is taken in the morning, which is very effective in case of the women who are suffering from this menorrhagia. Then Durvasvarasa, it is also very effective. This grass, hmm, easily available without any cost. You can use this Durvasvarasa 2 tsf daily, which relieves this menorrhagia. Then Shatavari, this is also very easily grown, and this also the leaves of the Shatavari is taken and the juice is prepared, and it is also very effective. And Guduchi in Amritaballi we call it as, and nowadays all sugar patients and all, they used to eat these leaves daily, which is very effective. And here we can use in the form of juice. And in case of white discharge,
white discharge. So the some women, they won't tell these symptoms, they will hide this, but it is not necessary to hide these symptoms. White discharge, which is seen after marriage and after delivery. So this Shvetapradara, which we call it is in Ayurveda, here we can take amlaki, yes, that is amla juice with honey. Amla juice in market also, so many preparations are available, and we can make it also in home. But especially in Kartika Masa, we can get this fresh amlas, and we can make juice of it. We can store it also, and then we can daily we can use this amla as well. And tandulodaka. This is tandulodaka. This rice before cooking, when we have to take out that water and we have to drink, which we call it as tandulodaka in Ayurveda. It is very fruitful. If you simply take 1 glass of this tandulodaka daily, once or twice, it is very effective. And this white hibiscus flower, which is very effective, you can mix that white hibiscus flower, make it dry it in home only, and you can make the powder and add it in buttermilk or tandulodaka. It is also very effective in case of white discharge. And durvarasa, that is grass. 4 part of the durvarasa is taken in 1 part of madhu, and we can consume it daily. Shatavari swarasa is also very effective. Then commonly used in home, jaggery. Jaggery is very effective. गुड़ गुड़ बोलते हैं हम. Jaggery is very sweet and it has got very medicinal properties. Daily, if you consume in the early morning, 1 piece of jaggery, it helps for to get rid of irregular periods, and also reduces the weight also. If the lady is obese, she can consume daily 1 piece of jaggery followed by warm water. She can easily reduce the weight also. This I have suggested for so many patients and I have got good results also. Whereas turmeric, haldi, it is easily available in our kitchen, which is very good. And in COVID time, we so many people have adopted taking this turmeric with warm milk. It is a good act as a rasayan also, and it is very good effective to prepone the periods, and also we can take it for our natural glow also. So cinnamon, which we call it as dalchini, so which we use as a masala item. So this cinnamon is very essential for a part of our kitchen and also in our health. It helps to regulate our blood flow to the uterus, and also it helps in treating the irregular periods. It also reduces the abdominal pain, nausea, and vomiting during the pyramid period. This cinnamon is very effective, which you can try it also, and I have suggested so many patients easily available, which you can easily eat it also. Whereas beetroot, all of we know beetroot is very good. Consuming beetroot will help to get rid of these irregular periods. If the woman is suffering from anemia, it helps to for the correction of the anemia and for the correction of irregular periods. And it, as it has got high amount of folic acids and iron, it helps to increase the hemoglobin level in the blood. It also works as an immunogo. So these are the few things which I have highlighted here as a home remedies, which we can adopt in our day-to-day life also. If the persons are suffering from such things, we can follow this, and it are very much fruitful also. So thank you for giving me an opportunity for Nirmal Ayurveda. Thank you. Uh, thank you, ma'am. And it was a really nice, wonderful, and informative session. All the details what you have shared related to the menstruation and how these things will affect your day-to-day life. Moreover, what are the reasons why we face all these menstrual-related issues? Why generally women face all these things? And more specifically, it is very good to know about the specific terminologies which has to be used related to. And sometimes when patient visit to the doctor, they would not be knowing exact terminologies why a doctor is using that. So if a general public is having knowledge related to the
terminologies of the menstruation, what is oligomenorrhea, what is dysmenorrhea, what is metrorrhagia, what is menorrhagia. So these things must be known to the public, and moreover, what are the hormones which affects the menstruation and the regulation of menstruation is very much important. So, as we have some viewers who would love to have the same session in the Hindi as well, so I will just brief the same session in Hindi with few points, few topics. Is it okay, Dr. Sita ma'am, No that I will? problem, sir. No problem. Actually, Uh, I was not knowing, so I didn't use Hindi language. no, it's okay. You can continue right now as well. We are having ample amount of time also, so we can do so. No problem, sir. Something, You can if you have. would like to, please, it would be very good if you would like to. Just some brief about the same things in the Hindi, and if some typical language terms are there, I'll definitely help the people to understand those things. Yeah. सो व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे, हमने जो भी आज बात करी, ये सारी बात थी मेंस्ट्रुएशन, हमारे जो मासिक स्राव होता है हमारे देश की औरतों में, जो सभी को पता है शुरू से चलता आ रहा है, क्यों उसमें कुछ खराबियाँ आती हैं, कुछ खामियाँ आती हैं, और कैसे उनको हम घर पे रहते हुए सिर्फ अपनी जीवन शैली को सुधारेंगे तो ये सारे मासिक स्राव में और जो मासानुमासिक वृद्धियाँ हैं, इन सारी चीज़ों में कैसे हम सुधार कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जीवन शैली को, अपनी दिनचर्या को, अपनी ऋतुचर्या को हम थोड़ा-सा अपने घर के माध्यम से ही इन सारी चीज़ों में कैसे सुधार लाया जा सकता है, इन सभी बातों पे अभी हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे को जो हमारे देश में माताएँ हैं, बहनें हैं, इनको अत्यधिक स्राव क्यों होता है या बहुत कम स्राव क्यों होता है, या जब मासिक आती है, मासिक धर्म आता है, महीना आता है, उस समय माहवारी होती है, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा दर्द क्यों सहना पड़ता है, और अगर ऐसी सब चीज़ें हो रही हैं, तो कैसे हम उनसे बच सकते हैं, कैसे हम उनका निवारण कर सकते हैं, कैसे हम उनका निदान करके और उनका सही उपचार कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी विषय है समझने वाला, जिसके ऊपर हम अभी बात भी कर रहे थे। जैसे कि सीता मैम ने हमें अपने पूरे लेक्चर के दौरान बताया कि क्यों ये सारी दिक्कतें होती हैं, उनके बहुत सारे कारण हैं। हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारी दिनचर्या में हम किस समय पे क्या कर रहे हैं, मोरओवर हमारे जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो कैसा है, हार्मोन्स का बैलेंस ठीक है या नहीं है। तो ये सारी ही बातें हैं जिनकी वजह से सारी दिक्कतें होती हैं। साथ ही में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, एक मैडम ने बताया प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की उसके अंदर क्या-क्या लक्षण होते हैं कि महीना आने से पहले ही दर्द शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होता है, नीचे एक पेट में नीचे दर्द होता है, अपने स्तन जो है वो भारी लगने लगते हैं, सर में दर्द होता है। समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि डिप्रेशन के सिम्पटम्स भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन की हम बात कर रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स में क्या-क्या होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे है कि एब्नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, बहुत कम हो रहा है, हुआ ही नहीं है बहुत महीनों से, या अगर एमेनोरिया है, हाइपोमेनोरिया, बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग हो रही है लेकिन वो 1-2 दिन के लिए हो रही है। फिर उसके बाद बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग चलती ही जा रही है, लेकिन कम ब्लीडिंग हो रही है, बहुत लंबे समय तक हो रही है। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे अफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे जानने वाली विषय ये है कि आज हम जिसके लिए मैडम ने हमारे को बताया है और जिसके लिए हम यहाँ पे सब जुड़े हैं, वो क्या है? वो ये विषय है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए इन सभी चीज़ों में सुधार लाया जा सकता है। मैं थोड़ा-सा ब्रीफ में आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से एक बार हिंदी में। एमेनोरिया होता है जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। जब बिल्कुल या तो वो प्यूबर्टी अटेन होने से पहले होता है, मेनोपॉज़ के बाद होता है, या फिर जो नेचुरल है वो होता है प्यूबर्टी अटेन होने से पहले, मेनोपॉज़ के बाद, जब आप महीना आना बंद हो जाता है उसके बाद, या फिर बीच में होता है जब प्रेगनेंसी होती है, गर्भावस्था के दौरान होता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है या महीना नहीं आ रहा है, तो वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो आप सभी से मैं गुज़ारिश करता हूँ कि आप अपने किसी भी नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक से या जिस भी चिकित्सक से आप रेगुलरली लगातार परामर्श लेते हैं, उनसे जाइए, उन्हें बताइए और उनको अपनी दिक्कत बताइए, जिससे कि आपका समय रहते इलाज हो सके और वो ठीक हो सके। ये सभी चीज़ें नज़रअंदाज करने वाली नहीं होती हैं। अगर एमेनोरिया है, आपको महीना नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत है,
तो ये आगे जाके दिक्कत बड़ी बन सकती है और कोई ना कोई परेशानी पैदा कर सकती है। ओलिगोमेनोरिया होता है कि आपको महीना तो आ रहा है, लेकिन वो 35-35 दिन, 40-40 दिन के गैप पे आता है, और वो 35-40 दिन का गैप लगातार बना हुआ है। लेकिन जो नॉर्मली होता है वो 27-28 दिन या 30 दिन मैक्सिमम, इतने में हो जाना चाहिए। उसके बाद हाइपोमेनोरिया है कि महीना आ रहा है लेकिन वो 2 दिन से भी कम आ रहा है और बहुत कम, मतलब स्पॉटिंग होती है, बहुत कम ब्लीडिंग होती है, उसे हम हाइपोमेनोरिया की कैटेगरी में रखते हैं। डिस्मेनोरिया है कि जब ज़्यादातर आज की डेट में अगर हम देखते हैं, हमारे पास भी बहुत सारी महिलाएँ या बहनें आती हैं, माताएँ आती हैं, और वो कहती हैं कि महीने के समय में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब भी उन्हें पीरियड्स आते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, और आप सभी को मैं बिल्कुल ये बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी बातें हम आज कर रहे हैं, चाहे वो डिस्मेनोरिया हो, ओलिगोमेनोरिया हो, एमेनोरिया हो या हाइपोमेनोरिया, ये सारी ही दिक्कतें अवस्था हैं। ये सब का अगर सही से समय रहते उपचार किया जाए तो ये सभी पूरी तरह ठीक हो सकती हैं। आपको ज़रूरत नहीं है इस पेन को हमेशा बर्दाश्त करने की। सही तरह से चिकित्सकीय परामर्श अगर आप लेते हैं तो ये बिल्कुल तरह से ठीक हो सकती है। तो ऐसे ये सारी परेशानियाँ हैं। मेनोरेजिया बहुत ज़्यादा स्राव होना समटाइम्स ये देखने को मिलता है कि अगर कोई सिस्ट है, यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड है या फिर कोई ट्यूमर की ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पे इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी महिला को, किसी माता-बहन को बहुत ज़्यादा स्राव हो रहा है, तो वो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। कंसल्ट करके उसका निदान करवाएँ कि क्या दिक्कत है, क्यों परेशानी है। आप हमसे भी अगर मैडम से बात करना चाहें, मेरे से बात करना चाहें, तब भी हमारे से आप बात कर सकते हैं। आप आयु फर्टिलिटी, निर्मल आयुर्वेद पे कहीं पे भी जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। अगर आप मैडम से बात कनेक्ट करना चाहें, आप हमसे कनेक्ट करिए, हम डायरेक्टली आपको मैडम के साथ कनेक्ट कर देंगे और मैम आपको आगे फर्दर गाइड भी कर देंगी। मेट्रोरेजिया है कि डिफाइंड इर्रेगुलर साइक्लिक ब्लीडिंग होती है, कभी भी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसके अंदर। क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए टू कंफर्म मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटी? अगर कोई पैथोलॉजी है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, सिस्ट तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नहीं चल रही, कहीं अंदर ट्यूमर तो नहीं बन रहा, तो ये सारी दिक्कतों को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि किस कारण की वजह से मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो रही है। जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन मैडम ने जैसा बताया है, वो है हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट काउंट, कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर तो नहीं है, समटाइम्स एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बार-बार ब्लीडिंग होती है, अबॉर्शन होते रहते हैं। थायराइड फंक्शन नॉर्मल चल रहा है या नहीं चल रहा, अल्ट्रासाउंड करवा के देखना चाहिए। हिस्टेरोसेल्फिंजियोग्राफी, जो हम जो ट्यूब्स होती हैं उनकी जाँच करके देखते हैं, कहीं उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं मिलता है, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। जनरल ट्रीटमेंट में सबसे मेन कॉमन रूल है कि बेड रेस्ट। जब भी आपको अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके अंदर सबसे ज़रूरी है कि आप प्रॉपर बेड रेस्ट लें। जितना बेड रेस्ट लेंगे उतना ब्लड फ्लो जो है वो कंट्रोल्ड रहेगा और हेवी ब्लीडिंग से बचेंगे। साथ ही साथ अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन करें, उनसे परामर्श लें और जानें कि वो क्यों हो रही है और उसका उपचार करवाएँ। समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा हम अपने हर सेशन में बात करते हैं, चाहे वो फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हो, और मेंस्ट्रुएशन इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। मेंस्ट्रुएशन भी ऐसा फैक्टर है जो फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इस आपके इमोशनल फैक्टर्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज़ में। आयुर्वेद में कहते हैं कि मन और जो आपका शरीर है, ये दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंध में होते हैं। अगर मन में कोई दिक्कत है तो शरीर में भी दिक्कत आएगी, शरीर में कोई दिक्कत है तो मन में भी दिक्कत आएगी। तो आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। सो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि आप साइकोलॉजिकली साउंड हो, इमोशनल स्टेट क्या है आपका, स्ट्रेस लेवल क्या है आपका, एंग्ज़ायटी लेवल क्या है, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं होम रेमेडीज़ की, तो डिस्मेनोरिया की अगर बात करें, कष्ट आर्तव, जो आजकल अगर मैं मेरे क्लिनिक में ही हमारे पास जितनी पेशेंट्स आती हैं, चाहे वो पीसीओडी की या और कोई नॉर्मल जनरल पेशेंट भी है, तो उसमें से 70 टू 80% फीमेल्स जो हैं, उनकी एक कॉमन कंप्लेंट होती है कि पेनफुल पीरियड्स, उनको पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसके लिए आप घर पे क्या-क्या कर सकते हैं? जैसा कि मैडम ने बताया, बहुत सिंपल चीज़ें अगर हम करना चाहें और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं। तो इसमें एक चीज़ है कि आप हींग को गर्म पानी के साथ मिला के ले सकते हैं, छाछ के साथ ले सकते हैं, घी के साथ ले सकते हैं। नॉर्मल अगर नहीं करना तो जीरे का पानी लें, आधा चम्मच जीरा पानी में डालें, उसे उबालें और उसके अंदर थोड़ा-सा गुड़ मिला के पी लें। इससे भी आपको पेट के दर्द में बहुत अच्छा आराम मिलता है। लता करंज एक दवाई आती है, लता करंज को हनी के साथ घिस के वो भी दिया जा सकता है। और कुछ ना हो तो एक जैसे जीरे का बताया, हींग का बताया, सौंफ एक बहुत छोटी-सी चीज़ है और बहुत आम चीज़ है जो हर किसी के घरों में मिलती है।
तो आप सौंफ ले लें, सौंफ का पानी पकाएं और सौंफ का पानी पका के पी लें। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे आपको इंस्टेंटली दर्द के अंदर उस समय जब दर्द हो रहा होता है वो दर्द में एकदम से आराम होना शुरू हो जाता है। अगर आप देखते हैं कि ओलिगोमेनोरी बहुत कम हो रहा है और साइकिल ज़्यादा लंबी चल रही है तो उसके अंदर क्या करना चाहिए? काले तिल का सेवन करें, काले तिल को पीस लें और उसका काढ़ा बनाएं और उसका सेवन करें। कुल्थी की दाल सबको मिलती है, हॉर्स ग्राम इसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कुल्थी की दाल बोलते हैं। कुल्थी की दाल को पानी में उबालें, उसको आधा जब तक रह जाए उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और सेंधा नमक डाल के ले सकते हैं। घृत कुमारी एलोवेरा सबको पता है, बहुत अच्छा है, सबके घरों में आजकल लगा हुआ ही मिलता है। आप रेगुलरली एलोवेरा खाएं, अगर खा सकते हैं, नहीं खा सकते तो मार्केट में मैडम ने जैसे बताया कुमारी आसव है और कुमारी और एलोवेरा का जूस मिलने लग गया है, एलोवेरा का फ्रेश जूस, एलोवेरा फाइबर, बहुत सारी चीज़ें आजकल मिल जाती हैं, बहुत ईजिली मिल जाती हैं। तो इसका भी रेगुलर अगर आप सेवन करते हैं तो ओलिगोमेनोरिया की जो प्रॉब्लम है वो कम होनी शुरू हो जाती है। गोमूत्र का सेवन मैं नहीं जानता कितने लोग कर पाएंगे, लेकिन अगर करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। खाली सिर्फ हमारी मेंस्ट्रुएशन को ही आपकी नॉर्मल नहीं करता, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो रेगुलरली गौमूत्र का सेवन करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद पपाया, अनंत मूल को बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है हर अलग जगह पे। आप रेगुलरली अगर आप पपीता खाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, पपाया अगर खाते हैं तो उससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर मेनोरेजिया है तो आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर, मतलब कम कम हो रहा है लेकिन बहुत लंबे समय तक चल रहा है, तो उसके अंदर क्या करना चाहिए? कदली पुष्प, आप सभी ने आज तक केला बहुत खाया है, लेकिन केले का जो फूल होता है उसके यूज के बारे में मैडम ने बताया हमें आज यहाँ पे कि केले के फूल के पत्ते को अगर आप उबाल के पानी में और वो पीते हैं सुबह खाली पेट में तो वो बहुत फायदा करता है इसके अंदर। दूब घास सबको पता है, पूजा में सबके घरों में इस्तेमाल होती है और इतनी कॉमन चीज़ है जो हमारे आसपास है कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आयुर्वेद के अंदर बताई गई हैं। और आप देखिए सारी ही चीज़ें मोस्टली हमारे आसपास ही होती हैं, कहीं ढूंढने भी नहीं जाना इन्हें। आप कोई भी देखिए, केले का फूल, केले का पेड़ नॉर्मली आजकल हर सोसाइटी वगैरह के आसपास नहीं भी होगा, मंदिरों के बाहर लगा मिल जाता है बहुत आराम से। और वहाँ केले का फूल लें, आप उसका पत्ता लें, केला नहीं केले का फूल का पत्ता लें और केले के फूल के पत्ते से आप देखिए अपना उपचार कर सकते हैं। दूब घास हर जगह मिल जाती है, दूब घास को लाएं, उसको अच्छे से निचोड़ें दबा के, उसके अंदर से थोड़ा सा स्वरस निकल के आएगा, वो स्वरस आप लेना शुरू कर दें, उससे बहुत फायदा मिलता है। शतावरी एक ऐसी, शतावरी गुड़ूची, गुड़ूची तो कोरोना काल से ऐसा हो गया कि हर किसी के घर में मिल जाएगी अब। तो शतावरी भी बहुत आराम से मिलने वाली दवाई है जो मार्केट में मिल जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, कभी भी कोई भी दवाई का इस्तेमाल आप करें, थोड़े टाइम के लिए आप अगर कोई चीज़ इमरजेंसी के लिए या जो हम चीज़ें बता रहे हैं होम रेमेडीज़, ये आप इनका सेवन कर सकते हैं, लेकिन निरंतर इनका सेवन ना करें। आपको कोई दिक्कत है तो उस समय के लिए तत्कालिक उपयोग में लिए लेके आ सकते हैं, लेकिन नज़रअंदाज ना करें चीज़ों को। होम रेमेडीज़ बताने का सिर्फ और सिर्फ प्रयास ये है कि आप अगर कभी डॉक्टर के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं तो उस समय के लिए उन चीज़ों को उस समय इमरजेंसी में कैसे मैनेज करें। लेकिन इसका ये नहीं है कि आप रेगुलरली इन्हें ऐसे ही लेते रहेंगे और ऐसे ही यूज़ करते रहें जिससे कि अंदर की जो बीमारी है, जिस वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, वो बढ़ ना जाए। तो इसलिए कभी भी कोई दिक्कत होती है तो आप अपने चिकित्सक की परामर्श ज़रूर लें, चाहे आयुर्वेद से लें, एलोपैथी से लें, जहाँ से भी लेते हैं। लेकिन आप कंसल्ट ज़रूर करें, डॉक्टर को कंसल्ट करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिमिलरली मैडम ने बताया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है व्हाइट डिस्चार्ज की, जो मैक्सिमम फीमेल्स में देखने को मिलती है करंटली। अब वो इन्फेक्शन की वजह से भी होती है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे कैंडिडा हो, चाहे वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके किसी भी तरह का, चाहे योनि प्रदेश में हो या यूट्राइन इन्फेक्शन हो या फिर आपका यूरिन इन्फेक्शन हो, ऐसी कोई भी दिक्कत है, मोर ओवर अगर शरीर में भी समटाइम्स कोई इन्फेक्शन होता है तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो देखने को मिलती है कि व्हाइट डिस्चार्ज। समटाइम्स ऐसा होता है व्हाइट डिस्चार्ज है बट उसमें कोई स्मेल नहीं है, स्टिकी नहीं है, क्लियर है। लेकिन अगर डिस्चार्ज आ रहा है, क्लियर डिस्चार्ज है, बिल्कुल कोई उसमें कलर नहीं है, तो वो हो सकता है नॉर्मली हो रहा हो। लेकिन अगर विस्कस है, गाढ़ा है, चिपचिपा है, सब थोड़ी सी उसमें स्मेल आ रही है और चिपक के आ रहा है, तो व्हाइट डिस्चार्ज में कोई ना कोई इन्फेक्शन की इंडिकेशन है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, आंवले का रस शहद में मिला के लें, बहुत अच्छा है। पानी को भिगो, चावल के अंदर, चावल जो है वो पानी में भिगोएं और उनको अच्छे से धो के वो पानी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। गुड़हल के फूल, जो सफ़ेद गुड़हल दो तरह का है, लाल भी है सफ़ेद भी है।
तो सफ़ेद गुड़हल के फूल को आप सेम इसी के साथ चावल के पानी के साथ या फिर छाछ के साथ ले सकते हैं। दूब की में हमने बात करी कि दूब घास का रस ले सकते हैं शहद में मिला के, और शतावरी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। उसके बाद और दूसरी क्या क्या होम रेमेडीज हम यूज़ कर सकते हैं। गुड़ का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। गुड़ अगर आपको शुद्ध गुड़ मिलता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। हल्दी, मैडम ने बताया कि हल्दी बहुत अच्छी है। हल्दी को गर्म पानी, गर्म दूध के साथ लेना है रेगुलरली, तो वो जो पीरियड्स हैं उन पीरियड्स को भी नॉर्मलाइज करती है। और थोड़ा सा अगर हल्दी आप रेगुलरली लेते हैं तो अगर आपकी डेट डिले चल रही है तो उस डेट को भी वहाँ से जल्दी आ जाता है। दालचीनी देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, दालचीनी सभी के घरों में मिलती है। जब पीरियड्स के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होता है, वॉमिटिंग आने को होती है, नॉजियाटिक रहता है, तो उस समय आप दालचीनी को पानी में पका के भी ले सकते हैं, साथ में अपने साथ भी रख सकते हैं। आप दालचीनी सूंघते हैं तो उससे भी वो नॉजियाटिक फीलिंग और वॉमिटिंग कम हो जाता है। मोर ओवर बीट रूट, चुकंदर अगर आप खाते हैं लगातार, बहुत रिच होता है फॉलिक एसिड में, और फॉलिक एसिड इज़ वेरी गुड फॉर द मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स एंड यूट्राइन हेल्थ। तो आपके गर्भाशय की हेल्थ के लिए भी जो बीट रूट है बहुत अच्छा है। तो मैडम ने हमें आज इतनी अच्छी अच्छी सारी चीज़ें बताई हैं, और जो कॉमनली हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घरों में। तो जो भी देख रहे हैं वो सबसे आशा है कि आप इनका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। दिक्कत होना, नज़रअंदाज करना, ये एक अलग कारण है। तो आप नज़रअंदाज ना करें चीज़ों को। जितना नज़रअंदाज करेंगे तो उससे दिक्कत होने के चांसेस और बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आज का ये सेशन आप सभी के लिए एक जागरूकता पूर्वक रहा होगा, सबको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। और मैं डॉक्टर सीता मैम, आई रियली थैंक डॉक्टर सीता मैम टू बी here with us on this session today and guiding us related to all the menstruation related issues and the home remedies for the same. It was really a very wonderful session, and hopefully this might have helped a lot of mothers, a lot of sisters for us, and we would be able to manage the same in the future. मोरओवर मैं आप सभी को ये दोबारा बताना चाहूँगा कि हम सेम इसी तरह हर शनिवार कोशिश करेंगे शाम को 4 बजे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो, लाइव रहें और ऐसे ही अलग-अलग विषयों पर आपके साथ चर्चा करें। इसके संबंध में related to this, if anyone have any doubt, they can directly ask us. We would be very much happy to clear your doubts. And if someone, some of the mothers or sisters, if they are feeling any sort of problems, they can directly discuss with us. If you want to speak to Dr. Seetha ma'am, you can connect with us and we will direct you to Seetha ma'am. Apart from that, you can also consult with the Ayu Fertility team, Nirmal Ayurveda team for your gynecological related disorders or any other disorders if you have. So once again, I thank you all. I thank Dr. Seetha ma'am for being here with us during the entire session. Thank you, Seetha ma'am. Thank you, sir. Thank you. Yeah, it was a really nice session. So I will be ending the session, and with this, I'll conclude the session. Thank you all.